Good morning, dear students. Today we are going to start the revision of chapter number 6, Life Processes. And in this we are going to take the subtopic Human Circulatory System and Nutrition. So let us start. So first of all, we will deal with the key concept of the chapter. So what are the different life processes which are undergoing in a human being? And what is a life process exactly? So the life processes are necessary for any organism to stay alive. अगर किसी भी व्यक्ति को जीवित रहना है तो उसके बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ लाइफ प्रोसेसेस, बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते रहते हैं. And in case of the human beings, what are the different life processes which are happening inside our body which makes us alive? They are the nutrition, the respiration, the digestion, excretion, the transportation. These are the certain life processes which are necessary for keeping us alive. Now, next point is that what are the different criteria which help one in knowing that a person is alive or a thing is alive. So the two main points are, one is the growth and another one is the movement. Okay. So these are the some key points of this chapter, starting basic key points which we are undergoing during the revision class. So like I have told you that we are today dealing with the transportation topic. Let us start with some important points of transportation. So in transportation in human beings, blood plays a very important role. So what is exactly blood? The first point is that it is a fluid connective tissue. What are the different components of the blood? The fluid medium is known as the plasma. Then there are certain blood cells. They are the white blood corpuscles, red blood corpuscles, and other types of cells which are termed to be the platelets. What is the function of the plasma? Plasma transports the food, oxygen, carbon dioxide, and nitrogenous wastes as well. Now we will look into the functions of the blood. Like just now we have studied the things which the plasma transports. The same things apply during the function of the blood, that is transport of the respiratory gases like carbon dioxide and oxygen. So blood functions in the transport of the nutrients, like the food is transported from one part of the body to another part of the body. Blood helps in the transportation of the waste products, that is the nitrogenous wastes. And it also helps us in providing defense against the infection, that is the white blood cells helps in fighting against the odds in our body. Now the blood vessels. Blood vessels, what are the main blood vessels in our body? They are arteries, veins and capillaries. So these are the basic points of the transportation. Now as we are doing the revision class, we should undergo certain MCQs also. We should go through some MCQs also. So the first MCQ is, which among the following is necessary to carry out the blood coagulation in a cut or a wound? तो इसका आंसर आपका है प्लेटलेट्स. ओके, सो प्लेटलेट्स जो है हमेशा ब्लड को कोएगुलेट करता है. हमारे जो ब्लड में प्लेटलेट सेल्स पाई जाती है वो ब्लड को कोएगुलेशन में हेल्प करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्टरीज एंड वेन्स आर कनेक्टेड बाय अ नेटवर्क ऑफ एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स एंड दीज आर द कैपिलरीज. ओके, सो लेट अस मूव टू द माइंड मैप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. तो ट्रांसपोर्टेशन को अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स में डिस्कस करेंगे तो प्लांट्स में सबसे पहले अगर हम डिस्कस करते हैं तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता है प्लांट्स में और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है. सो द टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज जाइलम. नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. तो फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्लोएम टिश्यू हेल्प करता है. नेक्स्ट इफ वी विल सी दैट हाउ ट्रांसपोर्टेशन हैपन्स इन एनिमल्स. एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन का जो मेन कंपोनेंट है आपका जो है
ब्लड है जो कि ट्रांसपोर्टेशन को कैरी आउट करता है, और ये जो ब्लड है वो आपका pumping of the blood in our body happens with the help of the organ which is the heart. Okay, तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि component of the bloods are RBCs, WBCs, platelets and plasma. आपकी 3 मेजर ब्लड वेसल्स हो जाती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. आर्टरीज का काम क्या है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं एक्सेप्ट वन विच इज द पल्मोनरी आर्टरी. और वेन्स का काम क्या है, दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट वन विच इज द पल्मोनरी वेन. हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है, it receives deoxygenated blood from different cells of the body, and the left side of the heart receives oxygenated blood from the lungs. So this is all about the mind map of transportation. इसी से रिलेटेड 2 MCQs आ जाते हैं, ये इनको आप सॉल्व कीजिए. नेक्स्ट इज, अब हम कुछ ट्रांसपोर्टेशन को स्टडी करेंगे बाय यूजिंग वेन डायग्राम्स. ओके, सो वी आर यूजिंग एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ओवर हियर, एंड वेन डायग्राम्स की हेल्प से हम ट्रांसपोर्टेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट के बीच का similarities and differences are shown over here in this particular slide. So right atrium में जो blood receive होता है वेना केवा से receive होता है, and as we have studied कि deoxygenated blood आता है यहाँ पे. Left atrium में pulmonary vein से blood enter होता है और oxygenated blood flow करता है right left atrium में. The common points between both right and left atrium is that they are atria, they are smaller and less muscular than ventricles, और इनका काम होता है receive करना blood को. Next comes right and left ventricles. So there are certain points of differences between right and left ventricles. जैसे कि right ventricle right atrium से blood receive करता है, again deoxygenated blood receive करता है. लेफ्ट वेंट्रिकल आपका ब्लड रिसीव करता है लेफ्ट एट्रिया से, एंड अगेन इट कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. राइट वेंट्रिकल जो है आपका लेस मस्कुलर होता है एज कंपेयर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज मोर मस्कुलर एज कंपेयर टू द राइट वेंट्रिकल. देन द कॉमन पॉइंट्स आर दैट they are large and more muscular than atria, and blood enters into the ventricles whether it is right or the left one from the atrium. Now the left atrium and the left ventricle of the heart. Left atrium receives blood from the pulmonary vein. Left ventricle receives blood from the left atrium. They are located on the left side of the heart, and they both allow the passage of oxygenated blood through them. Now here is a MCQ related to this topic. Next comes the oxygenated blood and deoxygenated blood. So oxygenated blood, as we all know, that it contains more oxygen, and deoxygenated blood, it contains more of the carbon dioxide. As the blood contains red blood cells and the other components of the blood, so both oxygenated and deoxygenated blood contains these. They travel through the heart and the lungs, they travel through the capillaries, they contain hemoglobin. These are the common points. Now comes the arteries and the veins. So arteries, they have narrow internal diameter, veins have wide internal diameter. Arteries का example आपका aorta हो गया, veins का example आपका vena cava आ गया. So these are the certain points of differences, and these are the certain points of the similarities. Like they carry blood around the body. Whether artery or the vein, they carry blood throughout the body. They are made up of smooth muscles, and the connective tissues. So here is another MCQ related to these topics. Now comes the flow chart. So here another interdisciplinary approach which we are implementing, that is the flow chart.
So now here you can see that the lungs and heart is there. लंग्स से जो है आपका जो है ब्लड मूव करता है पल्मोनरी वेन के थ्रू, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है एंड टू डिफरेंट बॉडी सेल्स इट टेक्स द ब्लड, ठीक है। और जो आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपके लंग्स से पास ऑन हो करके आपके जो है प्योर करके उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी सेल्स के पास आता है। ऐसे ही जो पल्मोनरी आर्टरी है वो आपके जो है वाया लंग्स आपके विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपका जो है एंटर करता है लंग्स में एंड देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है डिफरेंट बॉडी सेल से आता है और एंटर करेगा लंग्स में, ठीक है। बोथ हार्ट एंड लंग्स आर इंटरकनेक्टेड। सो वंस अगेन आई विल जस्ट लेट यू नो कि both pulmonary vein and pulmonary artery they come via lungs. Pulmonary vein आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, pulmonary artery डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ये कहाँ से मिल रहा है इनको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? सारे बॉडी सेल से। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से मिल रहा है? इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारी बॉडी सेल्स की तरफ जा रहा है। फिर दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग्स से आता है हार्ट की तरफ, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी पूरी बॉडी से जाता है लंग्स की तरफ। Now there are certain MCQs related to these topics. Next comes the nutrition, modes of nutrition. Through these two figures you can easily judge there are two modes of nutrition, autotrophic mode of nutrition and the heterotrophic mode of nutrition. आपका ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपका प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इन्वॉल्व्ड। हियर इज अनदर एमसीक्यू रिलेटेड टू दिस। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपके फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिस इंक्लूड्स the animals, example of animals, and the plants which does not contain chlorophyll like fungi. Now here comes the mind map of nutrition. So the raw materials which are required for the photosynthesis are carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll. हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन मेन आपका जो है एक अमीबा का आ जाता है जो कि होलोजोइक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है, और ऐसे ही आपका ह्यूमन बीइंग का आ जाता है हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन जो कि होलोजोइक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। Now here are certain MCQs which you have to solve as home assignment, and then there is another home assignment in which you can use the books, newspapers and internet to identify the problems related to digestive system as well as the transportation system. So students, we are going to stop over here and we'll continue with the revision of another topic of life processes in the next lecture. Thank you very much.